PGMI. attendance para mga end kaya feedback form share ko tol ba aga fill kino file contact number email PMDC number herself kino last time so بس مو يكرس انا بس
platform. Okay, sir. हेलो अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। अरीन बेटा, चले ठीक है, अब आ रही हैं। बेटा रिकॉर्ड। वालेकुम अस्सलाम। संगे मुमताज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Okay, Assalamu alaikum, everyone, and welcome to another session of our webinar series. Today's topic is reviewing an article for a biomedical journal. It's presented to you by the College Research Committee of Khyber Medical College in collaboration with PGMI Peshawar. My name is Irene Arif, and I will be your moderator for today's session. I extend my warm welcomes to everyone joining us today and look forward to a productive and engaging session. Before we start, I would like to give a brief reminder of our guidelines for a smooth session. First, it's to be noted that for CME accreditation, it requires attending the entire webinar. A feedback form will be shared by the end of the session. All participants must fill that form to ensure their presence. Kindly maintain a respectful and polite environment. Ensure stable internet, and everybody keep your microphones muted. If you have anything to say, please use the raise hand feature or directly message me in the chat box. The video is being recorded. By joining, you consent to be recorded. This recording will be uploaded soon on our YouTube channel. Now, I'd like to introduce our esteemed speaker, Dr. Mumtaz Mohammad. He is the Deputy CEO Academics, Associate Editor at JPMI Peshawar. Dr. Mumtaz brings a wealth of experience in academic publishing and research, and we're honored to have him share his expertise with us today. In today's session, Dr. Mumtaz will guide us through the process of reviewing an article. Whether you're a seasoned researcher or just starting your academic journey, this webinar will provide valuable insights and practical tips to enhance your skills in reviewing articles for biomedical journals. So now that everybody, I think, is here, let's get started. I will hand over the floor to Dr. Mumtaz. Thank you. Thank you, Dr. Arina, for your good words. As she introduced myself, so I will not repeat. I have prepared today's content for those people who are early career reviewers, and many of them might be thinking of whether I can become a reviewer, and if yes, how should I review a research paper for a journal. I will lead you to these processes step by step, inshallah. And I would like if this session can be interactive. Anybody can interrupt me at any time, so we can talk about something which may be a problem or confusing or something else. I will start my, as I mentioned, this is rather the basics of peer review for a scholarly journal. There is always a combination of people where you have many people of different levels of knowledge. If some of you might be, they may want to have some advanced knowledge about the peer review, we can have a part 2 of this session. Now, I will formally begin my presentation. At the end of presentation, we can talk about these things, question, answers, or any other thing. So I'm going to share with you.
I think the screen is visible to everyone. Yes, sir. Is that fine? Okay. This picture or sketch. This is a very famous one. You might have seen it many times in many places. There is a gentleman with bundle of papers in his hand, walking fast a road. But there are some people who who seem to be aggressive towards him and want to stop him or something like that. But the impression is not correct, and I think they want to check the papers, the luggage he has, and want him to correct it and then pass onwards. These are the peer reviewers with pens in their hands, not sticks. Okay, at the end of this session, we shall be able to understand the basic concepts of peer review, the roles and responsibilities of author, reviewers, and editors. Of course, if you work with a team, that is with authors and editors, you must know their roles as well. We would come to know the process of evaluation of a research paper. We will go briefly through the types of peer review. We will check and see the guidelines and the checklists for review. Similarly, we will come to know how we give feedback and recommendation to the editor in our report for making a probable decision. At the end, we will come briefly through the ethics of peer review. Peer review is evaluation of scientific, academic, or professional work by your colleagues. This is meant to assess the quality of articles submitted in a scholarly journal. Why? The purpose is twofold. Number one, to identify the mistakes, and number two is to improve the quality. Identification of mistakes is not for the purpose of criticism. No, this is a constructive feedback to improve the quality of the manuscript. Being a peer reviewer, please do not forget that your audience is not only the editor, but it is the author as well. This is human nature. When someone addresses you, then you reply to that person directly. In this case, the editor will send you a manuscript for review. So obviously, the peer reviewer considers the editor as the only audience and addresses the audience directly. But please, this is about the double-blind review, of course. Please know that your author of this paper, the names of which are not visible, they are also your audience. And you have to talk to them or write to them as well. Why a peer review is important? This is why a peer review is important for a peer reviewer. For a peer reviewer, this is important because of so many reasons. Number one is this quote, experience is simply the name we give our mistakes. We know that our mistakes gives experience to us. So this will give you an opportunity to build an experience from the author. You will learn from their mistakes. You will gather experience from their mistakes. And conversely, you will be able to become a good author yourself. When you come across a research article for which you have been asked to evaluate, when you evaluate that paper or the research article,
you will not only look at that and just write down the mistakes and recommendations. You will see many things, the way of medical writing, the way they analyze the data, they collect the data, and all the components of research article. When the peer reviews goes through all these steps, he becomes familiar with a research article, the medical writing, the procedures, the research methodologies. So this will help you become a good author as well. Another purpose is to improve your CV, and some people may need it for a promotion in their job. Okay, how can I become a peer reviewer? At the moment, in our setup, the people will contact you, those working in a journal, that please assign me an article for review. Otherwise, I have not seen another method, but there are so many ways. I'll tell you. You can go to the website of any journal which you know. You get yourself registered in that as reviewer. Later on, the editor may edit your profile and all these things, and he will manipulate your profile and give you registration. And afterwards, assign you articles for review in your own specialty. If you can see on the screen, this login registration is for anyone, including authors. But there is a sentence: would you be willing to review submissions to this journal? You can check this box to become a peer reviewer. I mentioned one thing, that the journals you know about, because there may be so many fake journals or IDs or something like that who will request you for a peer review, but that is not always right. So that is why I mentioned registered with those journals which you know very well. Okay, once you become a peer reviewer, then you will strive how to become a good peer reviewer. A good peer reviewer, these are the characteristics: should be sufficiently expert in his field. He or she should be unbiased towards the review. He or she should have communication skills, proper communication with the editor, or if needed with the author. Timeline is very important. Most of the journals give you a timeline that by this time you have to submit the review. Most of the time this is 2 weeks. And following this is very important. You must be professional enough to give your feedback, report, or whatever it is, and with utmost regards to ethics. I will come to know what types of ethics are involved in the review process. This is how we can come across different types of review. Single blind would mean that the reviewer knows the names of authors, but authors do not know who are the reviewers or who is the reviewer. Double blind means that neither the authors know who is reviewing my article, and neither reviewers nor the reviewers know who is the author of or who are the authors of this particular article. The third type is open review. In open review, obviously everything is known to both the parties. They know each other, who is reviewing and who are the authors. And there is a fourth type yet, post-publication review. Post-publication review is once the article is published, people accumulate comments on that.
There are a couple of them, perhaps at the moment, in which people comment, rather peer review. This is not a formal peer review, by the way, but people would comment from technical point of view, and these comments get accumulated, and some papers will change in the light of those comments. There are problems with this type of review, but I will not go into details of the problems. One of them is that they upload newer versions of the article, but the old versions remain on the site, and many people would mistaken by this. Anyway, we go ahead. For a peer reviewer, before the beginning of a peer review, he should have read the general guidelines for peer reviewers. This is must. Out of the blue, no. So यहाँ पे हम देख सकते हैं JPMI का मैंने पेज स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया हुआ है। JPMI के मेन वेबसाइट पे जो है ना, आपके होम पेज पे ये सब कुछ दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिव्यूअर्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये है, ये है, ये है, ये है, और ये सारी चीजें। तो नो the guidelines given on the website of the journal for which you are becoming a reviewer. Do you know what is the peer review process of that particular journal in which you are reviewing an article? Every journal has a different message, and the review is carried out in a different way, although the standards remains the same. But there are some deviations in every journal. The aims and the scope of journal might be different, and you are supposed to know about that. And all these things should be borne in mind before processing a review. Similarly, there are instructions to authors in every journal, and you should know about that, so that when you are reviewing the article, you know that instructions to authors, that authors are required to submit their articles in that particular format, and that content should be the same as per the journal's scope and requirement. Here, again, I have taken a screenshot from JPMI. There are author's instructions, you can see. So a peer review, this is very helpful for a peer reviewer if he or she reads out these things. Similarly, the journal policies. These two things should be considered first before embarking on a review. This is a plan what happens to an article when it is submitted to a journal. Most of the people know about this, but just to reiterate it, one gets his manuscript submitted to a journal. The manuscript is assessed by in the editor. The editor looking into that substance of that article, comparing it with the aim, scope, and standard of his journal, either accepts it for a review or rejects it. This is called editorial rejection. If he thinks that this might be suitable for publication and fits within the scope, and according to the policy of the journal, he sends it to the external reviewers. Once the reviewers, maybe one or this depends upon the journal, whether they adopt the policy of one reviewer or two reviewers, or maybe some of them may deviate. The review is returned back to the editor. He reassesses those articles in light of the reviews. And if that is the reviews are favorable, for example, if that
according to the recommendation of the reviewers, he will proceed. Most of the times, except for very rare instances, he will go according to the opinion of the reviewers. So the manuscript is accepted, processed, and published. Or depending upon the opinion of the reviewers, it is rejected. Another option is that further revisions are required. I will go through these details later on, that how to submit a report and how to suggest changes, minor changes, major changes, etc., etc. Once the changes are carried out, it is again sent to the journal editor. The journal editor will reassess the journal. If this is fine, he will again process it and publish it, or otherwise. Okay, what do we do in peer review? In the peer review, the evaluation of the content of the paper, the format of the paper, the language, and of course the layout and the graphs, all these things are evaluated. We will go discuss this in details in the coming slides. These are the contents which should be checked. Number one, does it fit in the scope? As I told you earlier, that you have studied, you have read the policies of the journal. So by now, you know the scope of that journal, and you can answer this question. Moreover, you will see the other things is the novelty of the research, whether this is significant, this is something important, will it aid to the existing pool of knowledge, or it is something which is quite old and will add nothing. Now, the components of that article, the format of the article, is the title representative of the article contents. जो लिखा गया है वो इसके मुताबिक है. बड़ा कॉम्प्लेक्स सा आर्टिकल टाइटल लिखा हुआ है कि भाई फलाना 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 डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड फलाना फलाना ट्रायल मल्टी सेंटर. ठीक है, आर्टिकल तो बड़ा भारी है, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है? इज दैट अकॉर्डिंग टू दैट द सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेटिव. सिमिलरली द टाइटल के बाद जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आता है. इज इट समराइज द कंटेंट क्लियरली? Is the paper well described, and the knowledge gap which was identified in the introduction has been defined clearly? The objectives are well articulated according to the title. The methodology applied is correct, solid, or updated, valid. All these things are being evaluated by the peer reviewers. After these results are seen, the results have different characteristics which are known to many people, and results are evaluated in the light of those parameters which are given elsewhere. The limitations and the conclusions. So these are the contents which are evaluated. A peer reviewer must pay attention to each and every part of a paper. Now we shall discuss it in detail, the importance or significance or novelty. Does the research question, the research addresses an important question? Is it something new? Is it something which is missing in the existing literature? Does it add something to the existing literature? And this manuscript have the potential to aid something in the existing pool, again, as I mentioned, in the same discipline, will it cause something in advance? After the significance or novelty, we see the clarity in format. The format you might have seen in the guidelines and the policies, that what format the journal adopts or instructs the authors to
write in a particular format. So this is very important for authors, especially to, before publishing in a journal, they should see the format of the prescribed format of their journal in which they require you to submit the article. Is the paper clearly written? Title, objectives and rest. आया जो आपने पूरा कंटेंट लिखा हुआ है वो एक से के बाद दूसरे, एक के बाद दिगरे जो सेक्शंस आते हैं वो एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते? इररिलेवेंट तो नहीं है एक दूसरे से। आपने टाइटल लिख दिया, ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए, अब मेथडोलॉजी में आप आ गए तो कुछ और कह रहे हैं, भाई ये क्या बात हो गई? जो चीजें हैं यू हैव टू स्टिक टू दैट। ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके लिए आपने पर्टिकुलर मेथडोलॉजी इख्तियार करनी है, अडॉप्ट करनी है। अगर वो नहीं है तो यू आर रॉन्ग। रेफरेंसेस ऑफ कोर्स दिस कम एट द एंड। मेथड्स में क्या चीज देखी जाती है? द ओवरऑल स्ट्रेटेजी, रिसर्च डिजाइन, सैंपल साइज, टेक्निक्स, अप्रोप्रिएट एंड करंट। और जो भी टेक्निक्स दिए हुए हैं वो सही तरीके से डिजाइन होने चाहिए और जो फाइंडिंग्स आने हैं उनके मुताबिक होने चाहिए। इसके अलावा जो आप तरीका इख्तियार कर रहे हैं, जो मेथडोलॉजी इख्तियार कर रहे हैं, इज दिस रिप्रोड्यूसिबल? कैन दिस बी रिप्लिकेटेड? और जो मेथडोलॉजी उन्होंने बताई थी वो उन्होंने या जिनका इन्होंने सोचा था वो आराम से इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी है या नहीं? Is there any tool used in the methodology? If yes, what were those tools and were those tools validated or appropriate or not? Data collection procedure and statistical analysis, of course, are important, and these should be according to your objectives. In the results, the planned data analysis, of course, this is already planned. Was that conducted in accordance with the already planned program? Other results and findings, if there are any, are they clear? Similarly, tables and figures are given in appropriate way. There is a problem here many of the times that in the result sections, many authors, they will give their results in text as well as in tables and graphs. I hope many of you know that one of the methods should be used for displaying your results, their results, of course, that it should be either text or graph or table. At times, there might be small overlap, which can be probably not very wrong, but not overlapping. That you describe one finding in the text form in detail, and then you give it in the table form again. This is major overlap. In this case, the results are not very good. The results display is not good. The discussion section, this is a little difficult for authors to write down. इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो शुरुआत वहां से होती है कि आप अपने जो फाइंडिंग्स हैं, जो आपको रिसर्च में जो फाइंडिंग्स मिल गए, वहां से शुरू करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ योर ओन रिजल्ट्स। आप उनको इंटरप्रेट करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि वो अपने रिजल्ट्स को दोबारा से यहाँ पे जो है ना वो सुनाना शुरू कर देते हैं, विच इज वेरी बैड एंड रॉन्ग। Results interpretation is part of the discussion. You start from your important findings, describe them, interpret them. After that, compare it with the existing literature. वो उनको ये करना चाहिए कि जो existing literature है उसके लाइट में उसको इवैल्यूएट कर लेना चाहिए कि पहले क्या था, अब मैंने क्या जो है ना मालूम किया हुआ है, या मुझे क्या चीज मिल गई है, दूसरे लोगों को कौन सी चीज मिली थी,
ये और उसके बाद कंक्लूजन्स जो हैं वो या इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस उन्होंने मेंशन किए हुए हैं या नहीं। कंक्लूजन्स में क्या होता है, कंक्लूजन्स जो आपने जो ऑथर्स ने ड्रा कर लिए होते हैं वो भी इसी एग्जिस्टिंग लिटरेचर के, जो इसी टॉपिक पे एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसी की रोशनी में तोलने होते हैं। So these are parts of discussion, and each and every aspect must be seen, evaluated, and identified whether they are addressed appropriately or not. Many of the people face problems in their discussion. So we are done with the content. Now we will see how we will evaluate composition. Composition में क्या है? मेडिकल राइटिंग। मेडिकल राइटिंग किस तरह होनी चाहिए? एक तो ड्रामा लिखा जाता है, फिल्म लिखी जाती है, अफसाना नावल जो भी है उसकी अदर जुबान होती है। यहाँ पे जो साइंटिफिक राइटिंग होती है उसकी जुबान अलग होती है। यहाँ पे आपका कोई जो है ना इधर उधर की चीज नहीं चलती, एक्स्ट्रा चीजें नहीं चलती, आप किसी को अल्फाज से जो है ना वो मुतासिर नहीं कर सकते। यहाँ पे स्ट्रेट अवे क्लियर कट सिंपल सेंटेंसेस और अल्फाज लिखने होते हैं। वर्बासिटी और फलाना फलाना जारगन इस किस्म की चीजें यहाँ पे नाकाबिल बर्दाश्त होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंसेस, नो जारगन्स एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम जबरदस्त किस्म का इंग्लिश लिखेंगे तो शायद ये जो है रिव्यूअर्स को मुतासिर कर लेगा, लेकिन दिस इज नॉट द केस। जितना सिंपल और क्लियर होगा उतना ही वो एडिटर्स और पीयर रिव्यूअर्स के लिए मुतासिर कुन होगा, अदरवाइज नो। यूज ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ टेंस, कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स? पास्ट टेंस। काम तो कर लिया हुआ होता है, यानी आपने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया हुआ होता है। I'm listening some voices. Is this meant for me or no? Okay, now I noticed. So the tense used is always past tense. प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, आपने फाइंडिंग्स लिख दी हैं, रिजल्ट्स आपने डिस्प्ले कर दिए हैं और अब आप पब्लिकेशन के लिए जा रहे हैं। दिस मीन्स यू हैव डन द वर्क। यस डॉक्टर अरीना, एनीथिंग? नो? ओके। So the tense, is the language used understandable for non-specialist readers? This is very important. जरूरी नहीं है कि आपके जो सिर्फ उसी फील्ड के लोग हैं वो उसको समझें और बाकी लोग ना समझें। आपको इतना सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहिए कि उसको नॉन स्पेशलिस्ट लोग भी समझ लें। The keywords and abbreviations explained properly. Many people would ignore this area. Please note that the authors should explain their abbreviations in the beginning. यानी जब आप ऑथर्स पहली बार एक एब्रिविएशन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बहुत ही कॉमन हो और सब लोगों को मालूम हो, उसके बावजूद भी वो एक्सप्लेन करना होता है। तो शुरू में जब आप के ऑथर्स इस्तेमाल करते हैं एक एब्रिविएशन तो ब्रैकेट में उसका पूरा लिख देते हैं। एनीवे, और सब्सिक्वेंटली the authors may use the abbreviation, but while using it for the first time, it should be described. Numerical information. जो फिगर्स दिए हुए हैं, अल्फाज का जो खेल खेला गया है वो सिंपल है या नहीं है, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, परसेंटेजेस हैं, मीन्स हैं, मोड्स हैं, डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं, वो पॉसिबल हद तक सिंप्लीफाई हो चुके हैं या नहीं। आपने जिस तरह बस वो सॉफ्टवेयर ने रिजल्ट निकाला उसी तरह डिस्प्ले कर दिया, अगर इसी तरह है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। You have to make it as simple as possible so that they are understandable to the common audience. The common audience, as I told you, it may include non-specialist
readers. The language should always be neutral, factual, and unbiased. अच्छा, अब इवैल्यूएटिंग कंटेंट के लिहाज से जो है हमारा लैंग्वेज easy and understandable, non-specialist. Does the text accurately reflect the overall results and conclusions? Why the study was done? Purpose मालूम है या नहीं मालूम? Participants का पता है? Yes. Okay. So you have to find out all these things. If these are explained well, the participants, the purpose, the objective, and everything, you have to address this. And of course, the results. Layout में is the text and visuals, are these well placed? यहाँ पे कोई भरमार तो नहीं की गई है। वो सारे लोग इस तरह हैं कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि उन्होंने अपना डेटा डाल दिया सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर ने बहुत सारी चीज़ें धड़ाधड़ निकाल ली, टेबल्स भी हैं, ग्राफ्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो नहीं है कि उसने झुके तो उठा के यहाँ पे रख दिए, इस तरह नहीं होता। ऑथर ने उन चीज़ों को उठाना होता है जो चाहिए होती हैं और उनको भी सिंप्लीफाई करना होता है टू द एक्सटेंट कि लोग इसको समझें। द ग्राफिक्स, द टेबल्स अप्रोप्रिएट यूज है या ऐसे ही वो पेज भरने के लिए है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोगों ने ये चीज़ें दी होती हैं वो, अगर फॉर एग्जांपल एक चार्ट ग्राफ टेबल है या एक चार्ट है फॉर एग्जांपल, उसमें इतने ज़्यादा फाइंडिंग्स उसने डाले हुए हैं कि जब रीडर उसको देखे तो एकदम से उसको लगे कि ये कितना ज्यादा जो है ना, कितने ज्यादा फाइंडिंग्स उसने एक ही चार्ट में जमा किए हुए हैं, ये तो उसको तो समझना ही मुश्किल होगा, इसको रीड करना ही मुश्किल होगा। तो इट विल काज हिंडरिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये देखना जरूरी है कि ये अंडरस्टैंडिंग में कोई हिंडर पैदा तो नहीं कर रहा है, इतने सिंपल हैं कि इसको आसानी से रीड किया जा सके। द हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, ऑफ कोर्स दीज आर this come in the evaluation of layout. Peer review checklists हम इस्तेमाल करते थे 5-6 साल पहले तक या 6-7 साल पहले तक। एक प्री फॉर्म्ड चेकलिस्ट होता था। बाय द वे, अगर मैं आपको बताऊं थोड़ी सी हिस्ट्री, तो जब ये डिजिटल दौर का वो नहीं था और हमारे पीयर रिव्यूअर्स इतने कंप्यूटर लिटरेट नहीं थे, तो हम आर्टिकल को प्रिंट करके स्टेपलर के साथ जोड़ लेते थे, यानी क्या स्टेपल कर लेते थे, और उसके साथ एक प्रोफार्मा भी स्टेपल कर लेते थे। और ये सारी चीज़ें हम रिव्यूअर को भेज देते थे बाय हैंड। वहाँ से वो रिव्यू कर लेता था और उसी पेपर्स में चेंजेस उसके ऊपर लिख लेते थे, जिस तरह चेंजेस करनी होती थी, जो चीज़ें रॉन्ग होती थी, अपने कमेंट्स और जो पीयर रिव्यू का तरीका है, तो उसी के मुताबिक वो उसके ऊपर राइटिंग कर लेते थे, बात चीज़ों को काट लेते थे, बात चीज़ों को ठीक कर देते थे, बात चीज़ों के बारे में लिख देते थे ओवरऑल। लेकिन वो रिव्यू जो है था चेकलिस्ट के मुताबिक येस या नो किस्म की चीज़ें भी होती थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वुड डू येस और नो। तो वो येस और नो जो है वो एक इफेक्टिव रिव्यू नहीं होता था। बेशक उसमें ऐसे बॉक्सेस होते क्या नाम है, स्पेसेस होते थे जिसमें आपने डिटेल्स से लिखना होता था कि क्यों, इसके क्या अच्छी चीज़ें हैं इस पेपर की और क्या बुरी चीज़ें हैं। जो कि बुरी चीज़ें तो नहीं होती, बल्कि वो चीज़ें होती हैं जो कि इम्प्रूव करने की होती हैं। लेकिन वो ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखते थे, ज़्यादातर वो बॉक्सेस चेक करके वापस भेज देते थे। अब ज़रा चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं और डिजिटल किस्म की चीज़ें आ गई हैं ज़्यादातर। तो मैं आपको बताऊंगा सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में कि वो किस तरह की रिपोर्टिंग होती है या पीयर रिव्यूअर्स किस तरह ओपिनियन देते हैं, रिकमेंडेशंस वगैरह।
वो आपको देते हैं एडिटर्स को। रिव्यू गाइड्स, यस। किस तरह गाइड, आपके गाइडलाइंस या वर्चुअल चेकलिस्ट कौन से होने चाहिए? भाई आप, जिस तरह मैंने एक पहले भी बताया था कि आप जर्नल को पहले देखें, जिस जर्नल का आप आर्टिकल रिव्यू कर रहे हैं उसके मुताबिक पढ़ें कि किस तरह का जर्नल है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फॉर्मेट क्या है, इंस्ट्रक्शंस टू ऑथर्स क्या है। तो रिसर्च द जर्नल देखें, उसमें पूरा जर्नल का नो हाउ जरा देख लें। उसके बाद एक आध आर्टिकल उसमें पढ़ लें जो कि पहले से छप चुका है। एक अंदाजा लगा लें कि मिजाज कैसा है इस जर्नल का। उसके बाद जो आपको आर्टिकल दिया गया है उसको पढ़ लें, अपना रिपोर्ट लिख दें। उसके बाद हाउ टू राइट द रिपोर्ट, to provide the editor with information to enable them to make a decision, to provide feedback to author to help improve their work. अच्छा, अब रिपोर्ट लिखने में क्या चीजें आपके जहन में होनी चाहिए? Your comments must be suitable to send to the author. कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज, कोई इस तरह के रूड कमेंट्स वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके कमेंट्स इस तरह के होने चाहिए कि ताकि कल को अगर आप आथर हों और आपको कोई कमेंट्स भेजें तो वो आप बर्दाश्त कर सकें। सो इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स, पीपल विल रिस्पेक्ट यू प्रोबेबली। कंस्ट्रक्टिव सजेशंस, सिर्फ क्रिटिसिज्म काफी नहीं है, आप कंस्ट्रक्टिव सजेशंस डालें बीच में। ये नहीं है कि ये गलत है सो बस गलत है, नो, करेक्ट दैट, सी क्लेरिफिकेशन। अगर आपको समझ नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, तो आप पूछ लें कि दिस चीज इज नॉट क्लियर एंड should be clarified by the author, by the way. Further elaboration चाहिए। If the paper reports original research, comment on whether the methods are appropriate, methods सही तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं या नहीं। कुछ इस तरह भी होगा कि वो आपकी समझ में हो सकता है ना आए। Be very honest with yourself, the editor and the authors, and clarify that I was unable to assist this. Make suggestions on how the author can improve clarity, conscience, and quality of the present. Confirm whether you feel the subject of the paper is sufficiently interesting to justify the length. अगर कोई लेंथ ज्यादा लगता है आपको, तो कंटेंट इतना इंटरेस्टिंग है कि आप वो जो है उसको इस लेंथ के लिए फाइन। It is not the reviewer's job to edit the paper for smelling, grammar, etc., but it is helpful if you can note and improve and give suggestions on that. This might not be correct. This sentence might not be correct for every journal or for every peer reviewer. This is good to correct the grammar, the language, and all these things. Although I will repeat that this is the job of the copy editor. But the peer reviewers must identify typographical mistakes, those in spellings, etc., and communicate it to the editor. रिसर्च इंटेग्रिटी कंसर्न्स जो हैं वो रिव्यूअर के नहीं हैं, लेकिन अगर मालूम हो गया तो पब्लिशर को फौरन मुतला करना, बता देना चाहिए कि इस तरह का मिसकंडक्ट इसमें सस्पेक्टेड है और प्लीज गो एंड सी। You have to provide detailed feedback, positive comments, constructive feedback, linguistic alterations, if any. पॉजिटिव कमेंट्स में आप पूरा पेपर समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि द टाइटल इज फाइन, द एब्स्ट्रैक्ट इज वेल रिटन,
ऑब्जेक्टिव्स ठीक हैं, मेथडोलॉजी जो अडॉप्ट की गई है वो भी तकरीबन ठीक है। और इसके अलावा जो आपके बाकी सेक्शंस हो, एक को ब्रीफली कंसाइज तरीके से एड्रेस करके आप बता देते हैं कि इसके अच्छे पॉइंट्स ये हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं। उसके बाद आपने गलतियां आइडेंटिफाई करके बतानी होती हैं, लेकिन उसमें आप उनको गलतियां नहीं कहेंगे बल्कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहेंगे कि यहाँ पे इस तरह होना चाहिए, अगर ये इस तरह होता तो ठीक होता, अगर ये यहाँ पे इस तरह की मॉडिफिकेशन की जाए तो अच्छा होगा। और जहाँ तक मैंने बता दिया ये लिंग्विस्टिक अल्टरेशंस, ये स्पेलिंग, ग्रामर, फलाना फलाना, तो ये इसमें देखने चाहिए। ये डिटेल फीडबैक में ये सारे तीनों कंपोनेंट्स होने चाहिए। रिकमेंडेशन, क्या रिकमेंडेशन होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सेप्ट एज सच, एक्सेप्ट विद माइनर रिवीजन जो कि सजेस्ट किए गए हैं, और द पेपर नीड्स अ मेजर रिवीजन। मेजर रिवीजन में आपने डेटा को जो है ना दोबारा से कुछ अरेंज करके एक्सपेंड करना होता है, लिटरेचर रिव्यू में कुछ और इजाफा करना पड़ता है, या मेनी में रीराइटिंग सम ऑफ द सेक्शंस। तो दिस इज मेजर रिवीजन। और द फोर्थ में बी रिजेक्ट। If the rejection is recommended, there must be a detailed account of all the reasons that as to why to reject the paper. Now revisions पे आते हैं। revisions अगर अथर ने करने हैं तो ये लिस्ट आप इंक्लूड कर दें कि फलाना फलाना वन। प्लीज नोट वन थिंग दैट नंबर योर कमेंट्स, नंबर योर कमेंट्स, नंबर योर रिव्यू comments. Asked to include a list of changes. The revised version may be assessed by the editor later on if only minor revisions are required, or return to the original reviewer if major are required. Many of the times, if minor revisions are required, that are being carried out by the authors and they return the article to the editor. Most of the time, the editor will accept this after minor revisions. But in case of major revisions, they would like to send it back to the same reviewer who had suggested those revisions. Technical aspects तो मैंने एक बता दिया कि हम प्रिंट करके पूरा आर्टिकल उसको एक बंडल बना के चेकलिस्ट उसके साथ नथी करके भेज देते थे लोगों को जो उस वक्त कंप्यूटर लिटरेट नहीं थे, और वो उसके ऊपर बल्क पॉइंट से चीज़ें लिख के हमें वापस भेज देते थे। हम वो इनकॉर्पोरेट करके उसकी सॉफ्ट कॉपी बना के वर्ड फाइल बना के अपने पास रख लेते थे। वो ये यहाँ पे जो है ना रिव्यूअर्स अब खुद ही अपना काम करेंगे। खुद ही कैसे करेंगे? दो चीज़ें यूज़ करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। फाइल जो रिव्यूअर्स के पास जाती है वो आमतौर पे बल्कि हमेशा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाती है फॉर्मेट फाइल में। तो फाइल में किस तरह करना होता है? आपने रिव्यू का बटन क्लिक करना होता है। रिव्यू पेन जब आ जाए तो आपने यहाँ पे ट्रैक चेंजेस ये क्लिक करना होता है। जब ट्रैक चेंजेस क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद आप कोई भी चेंज करते हैं टेक्स्ट में तो वो नजर आ जाती हैं। जो भी आप चेंजेस करते हैं आप जस्ट टाइप करें वो नजर आएंगी। नंबर 1। नंबर 2, न्यू कमेंट। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है न्यू कमेंट। इफ यू वांट टू गिव अ कमेंट that will be shown on the right of your screen with your name of course। यहाँ पे आपको एग्जांपल नजर आ रहा है। यहाँ पे जो बीच में टेक्स्ट के बीच में जो चेंजेस हुई हैं वो ट्रैक चेंज की वजह से हैं, और जो राइट साइड पे कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं ये कमेंट का बटन इस्तेमाल करने से हुई हैं। तो दो ऑप्शंस होती है, एक में बैलून्स को टर्न ऑन करना होता है, दूसरे में नहीं ऑन करना होता। दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट these two buttons are important for those who use Microsoft Word: track changes and new comment. These are enough. Okay, we are proceeding towards the end of this presentation. The do's: justify your recommendation with concrete evidence and specific example. ये एक फेरोनाना किस्म के तबसरा नहीं होना चाहिए कि दिस इज रॉन्ग।
आप बताएं कि क्यों गलत क्यों है, और उसके साथ अगर हो सके तो एग्जाम्पल भी दे दें. बी स्पेसिफिक so that authors know that they need to what do they need to do. Be thorough. आपने सारी चीजें देखनी होती हैं, कोई चीज मिस नहीं करनी होती. बी प्रोफेशनल एंड रेस्पेक्टफुल. जिस तरह मैंने पहले बताया था, अगर आप कमेंट्स, जिस तरह आपके ऑडियंस जो हैं वो ऑथर्स भी हैं, तो आपने उनको एड्रेस करना होता है. तो आपने इंतहाई रेस्पेक्ट के साथ जो है वो अपने कमेंट्स देने होते हैं. रिमेंबर to say what you liked about the manuscript. Do not accept an invitation to review when you should not. Please think over it. Always think over it whether you have enough time and expertise to accept an invitation. Time. अगर ये बहुत जरूरी है कि आप टाइम पे जो है ना अपना रिव्यू सबमिट करें. इग्नोर मैसेजेस फ्रॉम द एडिटर. आप एडिटर आपको बार बार मैसेज कर रहा है कि भाई वो रिव्यू आपका ड्यू है, प्लीज सबमिट दैट, एंड यू आर नॉट डूइंग दैट. पब्लिकेशन एथिक्स को चेक नहीं किया आपने, गलत. एक यूजलेस रिव्यू करना का कोई फायदा है नहीं. की कंपोनेंट्स अगेन एड्रेस करने जरूरी हैं. अनक्लियर, अनफेयर और बाय स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, गलत है, टोटली रॉन्ग. और अनजस्टली बायस्ड पब्लिकेशन जो है ना, आप वैसे ही ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है. सजेस्ट द ऑथर्स वायलेट पब्लिकेशन एथिक्स. आपको कोई ज़रूरत नहीं है सजेस्ट करने की कि उन्होंने पब्लिकेशन एथिक्स को वायलेट किया है. दैट इज द जॉब ऑफ समवन एल्स. द गोल्डन रूल ये है कि आप जैसे दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वही चीज़ आप दूसरे लोगों के लिए लिखें. In conclusion, a good reviewer is simultaneously a journal's editor's best friend and gatekeeper, as well as the best advocate and anonymous mentor for authors. There are some ethical aspects. There should not be conflict of interest. Conflict of interest can be explained that to review a project, आपको एक project मिल जाता है जिसको आपको review करना होता है, और उसमें आप शायद किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं पुराने ज़माने में इसी पेपर में, तो उसमें आपको कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए. दूसरे कन्फ्लिक्ट COI के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि इस वक्त मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने चाहिए. अगर इस किस्म की कोई चीज़ है तो आप उसको डिक्लेयर कर लें, कम्युनिकेट कर लें. बायस्ड रिव्यू आपको बिल्कुल ही क्लियर और अनबायस्ड होना चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. ये नहीं है कि आपको कहीं से पता चल गया, अगर डबल ब्लाइंड रिव्यू है और पता चल गया कि भाई वो सेटअप जो है या कोई चीज़ ऐसी है जिससे आपको पता चल गया, तो ब्रेक नहीं करनी कॉन्फिडेंशियलिटी कि मेरे पास आपका आर्टिकल है या मेरे पास किसी का आर्टिकल है. क्वालिटी एंड इफिशिएंसी, ये भी एथिक्स में ही आता है कि आपकी रिव्यू की जो क्वालिटी है वो सफिशिएंट इनफ होनी चाहिए कि वो साइंटिफिक तरीके से हो और फेयर तरीके से हो. अच्छा, again, the preceding slide mentioned the editors or the author's misconduct. कोई जरूरत नहीं है इसको उछालने की. There are of course some problems with this kind of peer review. This is classic peer review. डिले बहुत होता है इसमें, काफी लोग जो है ना वो डेयर कर देते हैं. बाइस अगेंस्ट स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ पेपर, ये भी होता है. सोशल एंड कॉग्निटिव बायसेस जैसे जेंडर, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, जो और नॉन नेटिव इंग्लिश वाले हैं उनके खिलाफ लोगों के हो सकते हैं. दिस इज क्वाइट पॉसिबल. ह्यूमन बीइंग. अनरिलायबल, बहुत सारे रिव्यूज जो होंगे वो अनरिलायबल होंगे, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे रिलायबल हों. इनएबिलिटी टू डिटेक्ट एरर्स और फ्रॉड, कोई हिस्सा इस तरह का हो सकता है जो कि सीरियस एरर हो उसमें, मेथोडोलॉजी में मैनिपुलेशन हो, रिप्रोडक्शन ऑफ फिगर्स हो, रिप्रोडक्शन ऑफ डेटा हो, डेटा का चुराना हो, सलामी स्लाइसिंग में, नहीं चीज़ें वो बाज़ औक़ात लोगों से रह जाती हैं, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते. ट्रांसपेरेंसी और अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जैसे आप
उसको अनएथिकली रिजेक्ट करने का कह रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। आपका रिव्यू जो है वो नहीं होता, क्योंकि वो डबल ब्लाइंड होता है, तो दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट। आखिरी जो बात है जो कि ठीक नहीं है पीयर रिव्यू में, क्लासिकल पीयर रिव्यू में, कि वो गुमनाम रहते हैं। वो जो रिव्यूअर्स होते हैं वो सिर्फ जर्नल को और जर्नल के एडिटर को पता होता है, और वो उसको एक्नॉलेज कर भी लेते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन उसको प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट और या कुछ और तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिलता। ये करंट लैंडस्केप और अपकमिंग जो ट्रेंड्स हैं वो है ओपन पीयर रिव्यू। आप एक चीज़ छाप देते हैं, वो लोग आते हैं उस पर तबसरे करते रहते हैं। although these are scientific in a scientific way, similarly collaborative and post publication peer review। post publication आपने अपने जो है वो आर्टिकल्स पब्लिश कर लिया, सब एक साइट्स साइट्स हैं दो तीन, जैसे F1000 है या पपियर है, उसमें आप अपना आर्टिकल अपलोड कर देते हैं तो पब्लिश हो जाता है खुद ब खुद। उसके बाद जो है ना, लोग उस पर राय देना शुरू कर देते हैं कि इसमें ये ठीक है और ये गलत है, इसमें ये होना चाहिए, उसमें ये तरीके से अगर हो जाता तो अच्छा था। तो ये चीज़ें अगर हों तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह मैंने बताया कि पीयर रिव्यू जो क्लासिक है उसमें प्रॉब्लम्स है, इसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा, AI असिस्टेड पीयर रिव्यू, जो कि आने वाले लोग वक्त में शायद ज़्यादा इस्तेमाल हो। फोर्थ, ये वन है लेकिन फोर्थ, प्री प्रिंट्स एंड एक्सेलरेटेड पीयर रिव्यू। प्री प्रिंट्स में ये होता है कि बस वही पहले से आर्टिकल दे दिया जाता है और वो लोग उस पे तबसरे करना शुरू कर देते हैं। दिस वाज द लास्ट स्लाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर पैशनेट लिसनिंग। If there are any questions or queries, I would like to reply if possible. Thank you, sir. Everybody, if you have any questions, feel free to ask, sir, or send them in the chat box. Does anybody have any question for sir? I think I wasn't so much clear. बस कि किसी को समझ ही नहीं आया और कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एक तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि सारी चीजें लोगों की समझ में आ गई और समझ गए, और बस वो इनके जहन में कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मुमताज साहब, इस डॉक्टर सईद असद मारूफ है। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, सो आई मिस द अर्लियर टॉक। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि जो अभी ऑनलाइन रिव्यूज़ हैं क्यूरियस से जैसे, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऑनलाइन ऑनलाइन रिव्यूज़ जो हैं, जो अब जैसे क्यूरियस के कुछ आर्टिकल्स हम लोग रिव्यू करते हैं, तो क्यूरियस उन्होंने क्या इसको बात कर रहे हैं? जी जी, मतलब उन्होंने इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है हाँ तो हाँ हाँ, ठीक है, क्यूरियस जर्नल का नाम ले रहे हैं ना? जी इज माई माइक वर्किंग? Sir, ठीक है, he's asking जिस तरह about मैंने online. बता दिया ये जी सॉरी। He's asking about online reviews, sir. ओके, I probably I was able to share screen. Desktop. Desktop. Ah. So, Mhm. उसमें देखते हैं। ओपन पीयर रिव्यू, ऑनलाइन पीयर रिव्यू, शायद आप इसकी बात कर रहे हैं।
That's a comment. Good. No, I'm just a question here. ऑनलाइन पीयर रिव्यू की बात हो गई, जहां तक मेरी समझ में बात आ गई तो वो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि ऑनलाइन पीयर रिव्यू जिस तरह के एक जर्नल ने अडॉप्ट किया हुआ है वो कैसे है। ऑनलाइन पीयर रिव्यू के बारे में मैंने बता दिया कि वो ओपन होता है, उसमें जो रिव्यू करता है उनके नाम नजर आते हैं, जो सही हो गया। रिव्यू कंटेंट अब होता है आप वो भी नजर आता लग जाना गोलियां वो चीज़ पर। है। आई होप आई एम बीइंग लिसन्ड। जो कंटेंट होता है, जो रिमार्क्स होते हैं वो भी नजर आते हैं, कमेंट्स भी नजर आते हैं। तो दिस इज ट्रांसपेरेंट एंड विजिबल टू एवरीवन। आई कैन नॉट से दैट दिस इज गुड और बैड एट द मोमेंट। सिर्फ ये जो बुरी बात है वो ये है कि अगर वो कोई पब्लिश हो, वर्जन्स जो हैं वो अपडेटेड वर्जन्स उसके अवेलेबल हो जाते हैं और वो अपलोड होते रहते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। नॉट रॉन्ग बट नॉट वेरी गुड, क्योंकि उसमें पुराने वर्जन्स मौजूद होते हैं उसी साइट पे और उसमें रॉन्ग डेटा हो सकता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। बाकी ओपन रिव्यू के बारे में जो है वो टाइम विल शो whether this was better than the classic peer review, the double blind or single blind peer review or not. I hope this answers your question. Yes, sir. Thank you. There's another question by Dr. Zia. He says, should we keep in mind common spelling mistakes while reviewing an article? Of course, this should be pointed out. Though I have told you that this is the job of copy editor, but this is good to point out them. There's another question as well. Why paid journals don't review articles, or either they review it or something else? They just tell you your article is accepted or rejected. Well, I might not be able to comment on that. Most of the people understand this, and there is unfortunately a phenomena of commercial publications. In PGMI, we receive publications to be counted towards merit of second fellowship. They are not published in JPMI, they are not published in KMUJ, they are not published in a Journal of Ayub Medical College or Journal of KGMC or Journal of Khyber Medical College, JMS. They are published in some journal, the name of which is not very known. And this is situated somewhere in the other end of Pakistan or an international one. And we don't know about that, but the people know about that very well. Many of the people, those who apply to us, they know about that journal very well. And I have seen, being the editor of a journal, I have witnessed strange events. For example, once a journal sent me a review, an article for review. After 2 days, I got an email and they said that, okay, we have published that article. I was astonished. Without review, जिस तरह आप बात कर रही हैं, without review, they are published. थोड़ा सा वो उसमें कमर्शियल एलिमेंट, बल्कि बहुत सा कमर्शियल एलिमेंट होता है, उसमें साइंटिफिक एलिमेंट को नहीं कंसिडर किया जाता। That is for making money, which we know all of them. They can approach many for their recognition as well, but they want money. If you submit, deposit money, they will publish it. And many of our local audience know about the publication in our local journals. It will take at least a minimum of 6 months. The peer review, बात यहाँ पर वही आ गई कि peer review के बगैर पब्लिश कर लेते हैं, तो अच्छा है या बुरा है? बहुत बुरा है।
क्योंकि हमने कहा था कि आपने सारी चीज़ें फिल्टर करनी होती हैं। एक शख्स का नजरिया तो ठीक नहीं हो सकता, उसको तोला जाता है मुख्तलिफ तनाजुरात में। तो अगर उसको तोला जाए, उसमें मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किए जाएं, उसमें सजेशंस दी जाएं कि इसको थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई कर लिया जाए, एडिटर की विजडम भी शामिल हो जाती है, तो उसके बाद उसको पब्लिश करना अच्छा होता है। ये नहीं कि आपने जू का तू लिख दिया और उसका जो है ना वो पब्लिश कर भी दिया गया। तो शुरू में जो दूसरे स्लाइड में हमने कहा था कि रिव्यू इज for identification of mistakes, correction of mistakes, and at the end of the day, improvement of that article, improvement of science. So peer reviews is essential for improvement of science. There's another question by Dr. Jihan. He asks, is it ethical by journals to ask authors to give reviewers' name and contact, and then they send it to those as well? Probably not. We do ask reviewers to send us names of reviewers in our emails, but please keep in mind that these are not for the purpose that your paper will be sent to them. This we want for the building of our database of reviewers. We include those reviewers in our database for review of another article, not your article. I have sent the feedback form in the chat box. Kindly everybody fill it out to ensure your attendance. Thank you. And there's another question by Dr. Ziad. He asks, what is the best way of reviewing an article by a journal? Single, double blind, or open or post publication? In our setup, probably I'll suggest double blind, which we are doing at the moment. Most of the journals, of course, not only we, most of the journals in our local setup are doing double blind because to minimize bias, conflict of interest. Any more questions, guys? डॉक्टर मुमताज, जी इकबाल साहब। आप JPMI ने क्या स्टेप्स उठाए हुए इस वक्त AI असिस्टेड रिव्यू को प्रिवेंट करने के लिए? फिलहाल तो हम कोशिश करते हैं, उनको तोलते हैं, नाप तोल में हमें नजर आ जाता है भाई, जो थोड़ा सा हमें हमारा जो क्यू है उसमें नजर आ जाता है कि किसी ने कुछ किया हुआ है, तो हम इग्नोर कर लेते हैं और उसको किसी दूसरे रिव्यूअर के पास भेज देते हैं, उस रिव्यू को हम खत्म कर देते हैं। आई डोंट नो, और मुझे मालूम भी नहीं है, इस वक्त हमने ऐसी कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं बनाई हुई कि इसको हम रोक लें, या कोई ऐसा एम्बार्गो या कोई ऐसी चीज जो कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड हो। डिटेक्शन तो ऑब्वियसली हो जाती है, लेकिन बैन करना, उसकी डिस्करेजमेंट करना, अभी तक हमने इस किस्म का कोई मेजर नहीं लिया है। क्योंकि Of course, डॉक्टर मुमताज, you are right, and I can understand the purpose of your question, but probably all the editors of the journals will have to sit together. क्योंकि एज ए पामी मेंबर्स हमें इस पे अब सोचना चाहिए कि माशाल्लाह फैकल्टी भी अब AI को यूज कर रही है, और कुछ रिव्यूज ऐसे आ जाते हैं जिस पे आप 100% श्योर होते हैं कि ये बेसिकली AI असिस्टेड रिव्यू है, और जी सिर्फ मतलब है उसको डिटेक्ट नहीं करना होता, उसको आइडियली फिर कोप के गाइडलाइंस के मुताबिक एक प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। तो जब भी आपकी HEC के साथ इस पर्सपेक्टिव में हो तो इस पॉइंट को जरा काइंडली एलेबोरेशन की जरूरत है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमने इसके साथ रहना है और इसको of यूज course. भी करना है, नो डाउट कि इसको यूज भी नहीं करना, लेकिन 100% जब ये यूज हो रही होती है तो फिर ह्यूमन ब्रेन कहीं लेग बिहाइंड कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट कि अगर आपके पास एक रिव्यू आ गई है कि भाई इसको रिव्यू कर लें आप इसको,
Chat GPT पे लगा दें कि भाई review this article for me. This is the only thing you do. You take your dinner while at the same time it will be reviewing the article for you. In few minutes it will generate a report. You save the file, copy paste that, and send it to the editor. Okay, I have completed my review, which is quite visible, which is not difficult to detect. And the COPE guidelines are probably clear at the moment, but the local, the PAMI and the local chapter should also sit down, I will suggest, and make some SOPs for them. Yeah, definitely. Though I will not say that this is a very bad thing and should be avoided, should be discouraged, or should be cursed. No. The review, some people will utilize it in a very constructive manner, but not at present, right? We need to explore this. We need to find out how to. As I had mentioned in the beginning of my presentation, that my presentation is for the early career reviewers, and we will not discuss the advanced things. I mentioned the AI-assisted review in the future trends. Anyways, this was a very valid and, of course, the need of the time and needs to be seen on urgent basis. Okay, Assalamu alaikum, Dr. Mumtaz, Dr. Naila Hadi here. Thank you, sir, for a very enlightening and very wholesome on a very important topic. I would just like to add a comment to this particular question regarding AI. In many international journals, I think all the top journals have policies regarding AI, and they have incorporated those policies in their journal, in their author guidelines. So I would also, I think, suggest, since you are an editor in JPMI as well, that we should also have certain guidelines regarding AI, and we should get it incorporated in our guidelines so that it is after this question, of course, it is in the minds of everyone that we need to have certain extent to which, what is the percentage, what is the extent to which we can add these, because we cannot get away from AI. We will have to do something to incorporate it into our system. So I think it would be better if we have some very clear-cut policy regarding it, and we can incorporate it in our guidelines as well, in JPMI guidelines as well. Thank you, sir. Thank you, madam. This is very important question, and of course, the concern of the day, incorporation of AI in review. You are very right to address this well in time. As I requested or mentioned in my conversation with Dr. Iqbal Haider, that this should be done urgently so that things do not become out of the route. ये जो हो रहा है इस वक्त, तो जिस तरह मैंने उनसे कह दिया कि ये डिटेक्ट हो जाती हैं, editors are able to detect the AI assisted review, which is not done in a very good way. And they might reject that, they might be able to accept it up to some extent. But as you mentioned, we have to live with AI. Of course, we have to. We have to live with AI, and we should, I fully endorse your suggestion that we should incorporate some policies with regards to AI in our journals. Thank you so much. Any other comments? I think everybody's clear with everything. Thank you, everyone. Thank you, sir, for such an insightful session. You're welcome.
So before we end the session, I would like to announce our next session that will be taking place on the 23rd of July. The webinar is going to be about how to write an effective discussion of a manuscript. The speaker will be Dr. Liaquat Ali. He's a professor of urology at Institute of Kidney Diseases and HMC. We look forward to everybody's participation in that webinar as well. I will send the link for registration of that webinar in the chat box now. Also, there's another announcement that we have. The third annual International Research Conference of KMC that's arranged by the College Research Committee will be taking place on 2nd and 3rd of October 2024. Registrations will commence soon. We look forward to everybody's participation and presence in the event. Thank you. Thank you very much, all of you. Thank you so much, Dr. Mumtaz, to be with us. You are welcome, Dr. Iqbal Haider. I was actually with my college and the old buddies of LRH. Thank you, sir. Thank you for your time and efforts. Thank you, Dr. Idris and Dr. Sabahat for joining us as well. And Dr. Naila Hadi for joining us. Thank you, everyone, all participants, for giving us your time and joining us today. By the way, at the end, I should thank the College Research Committee and its members and organizers to arrange this much forum for me to speak to the people in this way. I'm grateful to you. Thank you, sir. Regards. Allah Hafiz. Have a Allah great day. Hafiz. Allah. Areen beta, kindly recording off kar de.